Indian Navy is set to bolster its maritime strength with a significant milestone as we speak. Well, Prime Minister Narendra Modi will commission 3 warships, INS Surat, a destroyer, INS Nilgiri, a frigate, and INS Vagsheer, a submarine, today on January 15th. This, in fact, ladies and gentlemen, marks the first 3 naval platforms which will be inducted on the same day, a proud moment for India's naval capabilities. This achievement comes amidst growing concerns over China's rapidly expanding naval power. Beijing now boasts the world's largest navy with 234 warships, surpassing the US Navy's 219. However, India faces challenges with the lengthy lead times for new inductions. INS Surat, the last in a series of 12 destroyers, will be followed by another destroyer only a decade from now. Similarly, INS Vagsheer, the 6th and final submarine in a 20-year-old order, will have its successor in the year 2032. While India strengthens its defences, China continues to add an equivalent of 1 Indian Navy to its fleet every 8 years, a pace that underscores the urgency for India to ramp up its naval modernization. Let's take you through a report to understand this in better depth, which in fact the Indian Navy has released a video showcasing its new battleships. This January, be a part of history as the Indian Navy commissions the destroyer Surat, stealth frigate Nilgiri and submarine Vagsheer together at Naval Dockyard Mumbai in a landmark ceremony presided over by the Honorable Prime Minister. Built by Mazagon Dock shipbuilders, each a tribute to Atmanirbhar Bharat with unique operational capabilities. Nilgiri is a revolutionary design with a flush forecastle, signal suppression techniques and a super rapid gun mount with smart ammunition. Surat, with her size and strength, is a floating fortress. And Vagsheer, one of the world's most advanced submarines. Together, they embody a credible, cohesive, future-ready, and above all, combat-ready force. Now, my colleague Anju Nirwan brings you this exclusive report from the docks where the warships are being commissioned. Let's take a look. INS नीलगिरी में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, टॉर्पिडो और ब्रह्मोस मिसाइल्स लगाई गई हैं। आसमान में ये दुश्मन के रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके अंदर लगाया गया है। साथ ही साथ अगर आसमान में दुश्मन का कोई ड्रोन उड़ रहा हो, एयरक्राफ्ट उड़ रहा हो, तो ये अपनी मिसाइल से और अपने रॉकेट से उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। और साथ ही साथ इस तरह के रडार सिस्टम और एआई सिस्टम इसमें लगाए गए हैं, जिससे कि ये दुश्मन के सबमरीन्स को ढूंढने के बाद उसे समंदर के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। आपको भी मैं INS नीलगिरी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जबकि 15 जनवरी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ 3 युद्ध पोतों को कमीशन किया है और हमारी नौसेना में आज शामिल हुए हैं। हमारी नौसेना की ताकत बहुत और बढ़ गई है। अगर हम पकड़े नहीं जाएंगे, समुद्र में डिटेक्ट नहीं किए जाएंगे, तो हमारे ऊपर कोई घातक वार नहीं हो सकता, बल्कि हम सबसे पहले घातक वार करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। समुद्री डकैती और मर्चेंट शिपिंग पर ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए INS नीलगिरी विध्वंसक स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। इसमें इस तरह की ये माउंटेन गन भी लगी हुई है, जो कि बड़ी ही आसानी से दुश्मन के ड्रोन्स को नेस्तनाबूद कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ और गाइडेड मिसाइल से लेस ये डिस्ट्रॉयर हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाएगा। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट स्वदेशी रूप से विकसित
एडवांस और अत्याधुनिक युद्धपोतों में से एक है। इसे भारतीय नौसेना के एंटी सबमरीन, एंटी एयर और एंटी सरफेस युद्ध के लिए एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म की तरह उपयोग में लाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूर्णतया स्वदेशी है और इसे भारत में ही बनाया गया है। ये नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ और गाइडेड मिसाइल से लेस ये डिस्ट्रॉयर हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत को मजबूत करेगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये इतना शक्तिशाली है कि ये दुश्मन की सबमरीन को पानी में ढूंढ कर भी उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। Moving on, Anju Nirwan also gives us a sneak peek into INS Surat. Let's listen in to what has been said. INS सूरत भारतीय नौसेना का बेहद खतरनाक जंगी जहाज है। इस स्वदेशी घातक युद्धपोत में एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम लगाया गया है। इस सिस्टम से 16 ब्रह्मोस मिसाइलें फायर की जा सकती हैं। इसमें आधुनिक सर्विलांस रडार लगाया गया है। इसमें दुश्मन की सबमरीन को नष्ट करने के लिए रॉकेट लॉन्चर और टॉर्पीडो भी लगाए गए हैं और इसमें 4 टॉर्पीडो लॉन्चर्स लगे हैं। INS सूरत डिस्ट्रॉयर की लंबाई करीब 163 मीटर है और 7400 टन वजनी ये डिस्ट्रॉयर 4 पावरफुल गैस टरबाइन की मदद से 30 नॉटिकल मील की अधिकतम रफ्तार से समंदर में दौड़ सकता है। 15 ब्रावो क्लास का INS सूरत 7400 टन का है और 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये समंदर में दौड़ सकता है। उससे भी बड़ी बात, ये पानी के अंदर 45 दिनों तक रह सकता है। अपने तमाम तरह के सर्विलांस ऑपरेशंस ये पानी के अंदर कर सकता है, हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा कर सकता है। Next, Anju Nirwan takes us through the last of the Scorpion submarines to enter service. नीले समंदर में दुश्मन को चुन चुन कर मौत के घाट उतारेगी INS वागशीर। इस वक्त हम INS वागशीर पर मौजूद है, जो भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुई है। ये भारतीय नौसेना की सबसे तेज, सबसे घातक और सबसे फौलादी सबमरीन है, जिसे INS वागशीर कहा जाता है। ये एक क्लावरी क्लास की, स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है और इसे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर भी कहा जाता है। INS वागशीर को साल 2022 में लॉन्च किया गया था और अब इसे भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना का ये मजबूत सिपाही है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सबमरीन है, इस सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए जितने भी सेलर्स हैं और जितना भी क्रू है वो यहीं से जाता है नीचे और उसके बाद तमाम तरह के जो ऑपरेशंस हैं उनको अंजाम देता है। तो एक बार हम भी चलकर देखते हैं कि किस तरीके से तमाम जो टीम के लोग हैं INS वागशीर के, वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से नीचे उतरते हैं। तो एक बार हम भी चलकर नीचे देखते हैं। Now a destroyer, a frigate and a submarine, all being commissioned on the same day in a historic spectacle. This is an impressive achievement and a tribute to India's indigenous shipbuilding capabilities. It comes at a time when Pakistan and China are upgrading their naval fleets. China is already the world's largest navy with 234 warships. Earlier, my colleague Sandeep Unnithan in fact spoke to CMDE Srikanth Kesnoor on these developments. Listen in to the conversation. I want to start by asking you this. It's a Kumbh Mela of sorts for the Indian Navy. A destroyer, a frigate and a submarine all being commissioned on the same day. Was there a plan to this 3-in-1 commissioning? What's the message that we are sending out here with this? You said it right. It is the Navy's Kumbh Mela movement, or triple triumph as I've called it. And I think it's a auspicious set of circumstances coming together, that 3 ships or 3 combatant platforms got ready at about the same time. There's significance in the fact that the last of the destroyer line, the Project 15 Surat, sort of segues into the first of the frigate line, that's the Nilgiri. Similarly, you also have the last of the Scorpion design, but Indian-built Vagsheer. So I think certainly we are making a statement. It's formidable combat strength, formidable accretion of assets, and certainly if it is a coincidence, it's a wonderful one. It's a serendipitous one.
And I'm sure people who ought to be taking note are taking note of what this means and how it adds overall, not just to our combat capability, but is also a demonstration, as I said, of our shipbuilding prowess. Commodore Kesnur, I just want to highlight what Navy Chief Admiral Dinesh Tripathi mentioned in December at his press conference. He said that the Pakistan Navy was growing to become a 50 warship Navy. They've chosen weapons over welfare, he said. And the other interesting fact that he mentioned, Admiral Tripathi said that how China was helping to build the new Pakistan Navy, supplying them with 8 conventional submarines and of course frigates and the capability to build them. You know, I'm aware of the fact that you are one of the commissioning crew of the INS Delhi almost 3 decades ago, the first ship of the class, and we are seeing the last ship finally with the Surat. But you know, when the INS Delhi was commissioned, you didn't have this China-Pakistan nexus as strongly as you have today, which the Navy Chief highlighted. How does this, you know, alter our maritime posture? The fact that earlier you were looking at primarily one adversary in the Indian Ocean, but now you're possibly looking at 2 with China entering the Indian Ocean as well. Yes, absolutely. I mean, like you talk of two-front war on land, I think you have to look at these two people colluding, cooperating, and collaborating at sea. Right. And that can happen not just in wartime, but in peacetime too. It can happen in terms of bases, it can happen in terms of sharing of intelligence, it can happen in terms of assets. Yes. And obviously, China is helping Pakistan. So, see, Pakistan being China's cat's paw is not something new. But Yes. the fact that it is getting so much hardware is a matter of concern, and I think it must concern the decision makers in Delhi. Now, how we sort of look up to this challenge, there are no easy answers, as the title of one book says. But what we have to do is not rest on our laurels, Yes. up our shipbuilding and our submarine building, capabilities even more, bring out ships at a much faster rate, because we have to have that sort of differential. Yes. Yes, it is true that geography favors us to some extent. Yes. But we got to maintain a sizable asymmetry with Pakistan, which was Yes. there, as you brought out, 30 years ago when we commissioned the Delhi. There was sizable asymmetry between India and Pakistan, and that is threatening to come down. Yes. And increasing Chinese collusion will make it even more of a level field. So we got to strive to enhance that, and which is why I think having these 3 ships is a very good step. Yes. But it is a first step in building. We should look at a 150 ship, 200 ship navy. I mean, that's what we should aim for.